That was your call option. Okay. Now, yes. So now we will go on to the PPT. या PPT फटाफट समझ जाओगे. Strike price. Everybody understands what strike price? Correct? कोई समझाने की जरूरत नहीं है ना. What is strike price? अभी ये सब पूरा पूरा आप समझो, पढ़ोगे, complicated है. Correct? So I explain to you in a very easy way what is a strike price. What is a premium? Everybody understands what is a premium? Correct? Yes, premium is not 10. Yeah, strike price was 10 exactly. Premium was 1. ठीक है, everybody understands this. पढ़ना है आप पढ़ सकते हो, take screenshots. So you all have like something like a literature to read if you want to. Please take snapshots if you want. But मैंने आपको समझाया है so that you understand this in real terms, what this is. Okay, so that's what I'm saying. आप theory समझोगे ना, you don't need all this literature. You need to understand the concepts, okay, which I'm focusing on right now. Margin. Okay, now I'll tell you who pays the margin. Okay, जब भी आप खरीदते हो options, all right, what is your maximum loss? Premium paid? Yes or no? Premium paid is your maximum loss, correct? So when, yes, so premium paid, यहाँ पे 1 रुपया था premium, right? So जब when you pay the premium, that is your maximum loss. उससे ज्यादा आपको risk है आपका कोई नहीं है ना? है कोई risk? नहीं है. You paid your risk? Yes or no? Did you pay your risk or no? You already paid your risk. जो 1 रुपया था वो आपने already pay कर दिया seller को. Correct? So there is no risk. You already gave your risk. So when you, yes, so when you buy options, you already pay your risk. So when you already pay your risk, you do not need to pay margin. Because आपका जो आप जब खरीदते हो ऑप्शंस, यू डू नॉट नीड टू पे मार्जिन. आपको खाली प्रीमियम देना है. क्यों? बिकॉज आपका जो रिस्क था वो आपने दे दिया. इससे ज्यादा रिस्क है नहीं, तो किस बात का मार्जिन? ओके, सो व्हेन यू बाय ऑप्शंस, यू विल जस्ट पे योर this thing, your premium, and no margin. When you, because you have limited risk limited to premium paid, you paid, रिस्क खत्म. ओके, फ्रॉम द ब्रोकर एंड फ्रॉम द एक्सचेंज पॉइंट ऑफ व्यू अभी जो है वो आपका है, लेकिन फ्रॉम ब्रोकर एंड एक्सचेंज पॉइंट ऑफ व्यू जो आपका जो डैमेजेस था वो ऑलरेडी आपने पे कर दिया है. नाउ व्हेन यू आर एन ऑप्शन सेलर, ओके, व्हेन यू आर एन ऑप्शन सेलर, आपका रिस्क इज लिमिटेड और अनलिमिटेड? ऑप्शन सेलर लिमिटेड और अनलिमिटेड? अनलिमिटेड. ओके, सो अनलिमिटेड. तो फ्रॉम द एक्सचेंज एंड ब्रोकर पॉइंट ऑफ व्यू, कल उठ के आप बड़ा लॉस करके बैठ जाओगे, हु इज गोइंग टू टेक रिस्पांसिबिलिटी? You will have to pay margin. When you sell options, you will have to pay margin. Got that? Because आपका unlimited loss है. आपका unlimited loss कोई और responsibility नहीं लेगा. आपका trade है, you will have to take responsibility for that. For that, you will have to pay margin if you sell options. क्या margin? जो futures का margin लगता है वो same margin आपको option selling में लगेगा. But अगर आपको roughly 1 lakhs plus minus, okay? लेकिन अगर आप ऑप्शंस बाय करते हो, देयर इज नो मार्जिन, यू ओनली पे प्रीमियम. हाउ विल यू पे प्रीमियम? व्हाट इज योर प्रीमियम ओवर हियर? ये बुक का जो अपना जो स्टोरी था, प्रीमियम कितना था? 1 रुपी इंटू द लॉट साइज. लॉट साइज कितनी थी यहाँ पे? 100, राइट? सो 1 into 100 is 100. So you pay a premium of 100 rupees, right? So what is the premium? The number, the value basically into the lot size is what you pay, all right, to enter the transaction. So over here 1 रुपया प्रीमियम था, 100 lot size था, तो 1 into 100 is 100. अगर 2 रुपए का मार्जिन है, 100 lot size है, तो कितना आप पे करोगे to enter the trade? 200, correct? Because 2 रुपए का प्रीमियम है और 100 lot size है, so you pay 200. Correct? So 200 is the lot size you pay. So जो भी value है आपका margin का, that into the lot size is what you pay to enter the trade. Got it?
All right. So this is what it is. Right. So this is how you either who pays the margin, seller pays the margin, and the buyer will generally this thing. If buyer does not exercise his right to buy, will the margin money refund to the seller by the broker? Margin money, it is not about does not exercise. ये जो है margin is basically null and void ना. Obviously margin gets released ना. जब भी आप trade square off करोगे तो margin release ही हो जाएगा ना आपका. एडविन क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? वो ट्रेड हुआ राइट. सो अगर आपने मार्जिन यूज नहीं किया, अगर आप बेनिफिट में हो तो आपको मार्जिन प्लस आपका प्रॉफिट मिल जाएगा. अगर आप लॉस में हो तो मार्जिन माइनस आपका लॉस आपको मिलेगा रिफंड. राइट. राइट. What is the term for premium? Lot size. So lot size is not something that we have to decide, is decided by the exchange. We don't decide that. Premium, we will understand how the premium is computed. It's coming. Okay. Lot size, we don't decide. It's all decided as per the market cap and as per all of that. So we don't get into how the margin is this thing, how the lot sizes are decided. Okay. Now expiry. We know that expiry R4 is the last Thursday into the this thing, right? So last Thursday of the month is generally the expiry. Near month का ये month का March expiry होगा. Far month is I'm sorry, next month का April, last Thursday of April will be expiry, and far month is going to be last month of May, last Thursday of May, which is expiry. ठीक है? So we already understand expiry. Positive correlation. Okay, so we will understand. Okay, so out of this entire thing अपने समझेंगे what is exercise. What is exercising? So who will exercise the option? Who will exercise the option? Sandeep. वो क्या बोलेगा? हाँ, buyer will exercise the option. वो बोलेगा कि भाई ये लो तुम्हारा कार्ड, मुझे बुक्स दो. Let's get on the actual transaction. Let's go and do the actual transaction. That's called exercising. Actually transacting, actually taking delivery is called exercising. Okay. Generally कोई exercise करता है? Come, not too many people exercise their options. Correct? Because अपने what is the view? Short term. अपने को exercise में interest नहीं है तो cash market ही कर लो. Exercise में interest नहीं है. What do you want to do? भाई advantage लेना है 50 रुपए का, उसमें कौन इतना सारा investment करेगा? Okay, so अपने मार्केट में कौन जनरली एक्सरसाइज करता है? बहुत कम. Alright, but this is the meaning of exercise, that you actually go and complete your transaction. जो आपने प्रॉमिस किया है, जो भी किया है, वो एक्चुअली जाके करो. That's called exercise. And what does he go and tell? भैया Vijay, my seller, I am assigning you. What is this assigning? Is like I'm assigning you to exercise your contract. What is assigning you? Bhai, I want to go ahead and finish my transaction, the real transaction. Give me my books, take your money and finish it. Let's take deliveries. That's called, so he will go and tell the seller, Bhai, I'm assigning you to exercise the contract. Did you understand what is assigning and exercising? राइट. वो बायर जाके क्या बोलेगा सेलर को? आई एम असाइनिंग यू टू एक्सरसाइज द कॉन्ट्रैक्ट. सेलर विल ओनली हैव टू से यस. सेलर has no say. He has to exercise the contract as per the assignment, as per the contract. Okay, so that's assignment and exercising. Now let's think about something else. Okay, so we will do positive correlation later, open interest we will do later. Okay, we will not do that now. We will do that when we are doing it. Let's understand first concepts. Okay, so now, okay, so let's do this first quickly. Okay, what's the time? Yeah, so we have 7-8 minutes before we break for tea. So uske pehle let's quickly do this. Okay, it's an example. और एक example डाला है मैंने इधर, just to reiterate that entire concept one time. So short options versus call options. Okay, yeah, short call versus long call. So there we are trying to buy
से अ 1600 रुपीज का कॉल, कोई स्टॉक है जिसका विजय एनी टाइम, no, exercising is at expired, you can't exercise generally any time. In the US you could, but in generally exercising is done at expiry. Okay, in our country it doesn't happen anytime. Now there is a, we are talking about a stock XYZ. Okay, stock XYZ at 1600 का at 1600 का call. Okay, 1600 का call of an XYZ stock, 1600 का call at XYZ stock. Okay, and this call has a premium of 100 rupees. All right, premium कितना है 100 rupees. Now ये जो XYZ stock है वो 1600 rupees में आज ट्रेड हो रहा है. Is everybody with me? This stock XYZ is trading at 1600. Okay, just 1 second guys. So this XYZ, yeah, so by mistake. So this XYZ stock is trading at 1600. This is trading at 1600 rupees. तो उसका जो कॉल है उसमें प्रीमियम है 100 रुपीज का. ठीक है, अब ये जो XYZ स्टॉक है जो 1600 में ट्रेड हो रहा था, नाउ एट एक्सपायरी वो 2100 हो गया. It became how much? It became 2100 at expiry. So prices went up by how many? 500 rupees? Yes or no? Prices of the stock went up by 500 rupees. तो ये पूरा ट्रांजैक्शन करने में, ये कॉल बाय करने में एडवांटेज है कि उसमें एडवांटेज नहीं है? फर्स्ट ऑफ ऑल, एडवांटेज हुआ कॉल बाय करने में? यस, कॉल बाय करने में एडवांटेज हो गया, बिकॉज एडवांटेज पूरा 500 रुपए का एडवांटेज हो गया. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बायर. बायर को कितना प्रॉफिट हुआ? फर्स्ट ऑफ ऑल एडवांटेज है यस ऑफ दिस कॉल ऑप्शन एग्जीक्यूट करने में, राइट? अभी बायर को प्रॉफिट कितना हुआ? 400 का. क्यों? बिकॉज एडवांटेज 500 का था, लेकिन उसने 100 रुपया दिया ना टू बाय द कॉन्ट्रैक्ट, करेक्ट? तो एडवांटेज में से ही 100 रुपया जाएगा, तो उसका कॉस्ट हो गया 100 रुपीज का, तो उसका प्रॉफिट कितना हो गया? 400 का into the lot size. Okay, I'm not done the lot size, I've not got involved because this is just into the lot size, right? We're talking about per contract, right? Into the lot size then. So this, his profit is going to be 400 rupees. Now इसका 400, अभी इसको कितना लॉस हुआ? उसका कितना कितना लॉस हुआ? उसको 500 का लॉस हुआ. अगर इसको 500 का प्रॉफिट, तो ऑब्वियसली ही गॉट अ लॉस ऑफ 500. लेकिन वो 100 रुपया उसने लिया था ना पहले, he took his 100 rupees or no to sell the contract, तो उसको वो definitely वो उसने रख लिया. So उसको फिर लॉस हुआ 400 का. What is 400? 500 minus the 100 rupees of premium received, right? तो उसको लॉस हुआ now net 400. Now another situation, अगर the price is expired at 2000, stock XYZ stock at expiry मतलब last Thursday of March, supposing last Thursday of March is 31st of March. 31st of March पे ये जो XYZ stock था, जब ये जो फर्स्ट बिगिनिंग ऑफ एक्सपायरी में जब 1600 था, अभी एंड ऑफ एक्सपायरी 2000 हो गया. एडवांटेज है कॉल ऑप्शन में? ऑफ कोर्स एडवांटेज है. कितना एडवांटेज है? 400 का. यस, 400 का एडवांटेज है कि नहीं? 1600, 2000 माइनस 1600, 400 का एडवांटेज है. यस, जिसके पास ये कॉल ऑप्शन है, अगर उसको एक्सरसाइज करना है तो उसको मार्केट प्राइस से 400 रुपया कम में स्टॉक मिलेगा. यस, सो ही हैज एन एडवांटेज ऑफ हाउ मच? एडवांटेज ऑफ 400 रुपीज. नाउ उसने 400 का एडवांटेज है से ठीक है, लेकिन उसने ही हैज बेसिकली गिवन ना 100 रुपीज to buy this. So 400 minus 100, so his net advantages is 300. इसका loss is 300. Is everybody with me guys? Correct? Because उसको भी disadvantage है 400 का, लेकिन वो 100 रुपया मिला है ना उसको to sell the contract. So he now has a disadvantage of 300. He has an actual loss of 300. All right? If expiry is at say 1800,
एक्सपायरी अभी 1800 में, तो ऑफ कोर्स एडवांटेज है, बिकॉज करंट मार्केट प्राइस में 1800 है और आप एक्चुअली एक्सरसाइज कर सकते हो 1600 में, तो ये कॉन्ट्रैक्ट में तो एडवांटेज है. देयर इज एडवांटेज ऑफ हाउ मच. नाउ व्हाट इज द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ दिस गाय बायर? 100. क्यों? बिकॉज 200 का एडवांटेज है, 100 रुपया ही हैज ऑलरेडी पेड, right? So he got this advantage, right? Now this guy has a disadvantage of 100. Why? Because actually disadvantage of 200, he has received 100, actual loss of 100. Now 1700. अभी एक्सपायरी पे, नाउ दिस सिचुएशन में एक्सपायरी पे 1700 हो गया. ओके, 1700 हो गया तो ये में एडवांटेज है, ऑफकोर्स एडवांटेज है. एडवांटेज कितना है? 100 रुपीज का. लेकिन ये जो 100 रुपीज का एडवांटेज है वो नो प्रॉफिट नो लॉस हो गया. क्यों? क्योंकि अरे भाई 100 रुपीज तो ठीक है, एडवांटेज है, नो बडी कैन अग्री डिसअग्री के एडवांटेज नहीं है, एडवांटेज 100% है. अरे अरे यार, व्हाट हैपेंड? आई क्या? सो डेफिनेटली देयर इज एडवांटेज, बट जो एडवांटेज है हैज गॉट वॉश्ड अवे विद द प्रीमियम पेड. So now there is no net advantage. Okay, and this guy also has no profit no loss because advantage है. 1700 में भाई वो बेचेगा 1600 में, लेकिन जो दूसरा 100 रुपीज उसको प्रीमियम मिला है वो उसका लॉस ठीक कर देगा, right? So net result is correct, Ramkrishna. No profit no loss. Now this point of the trade where there is no profit no loss is called the break even point. इसको क्या बोलते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट. ओके, this is a point where there is no profit and no loss for a call buyer or the call seller, because जो भी एडवांटेज था वो प्रीमियम ने ले लिया, प्रीमियम ने वो ले लिया, करेक्ट? सो अभी बियॉन्ड ब्रेक इवन पॉइंट के नीचे, ओके, ब्रेक इवन पॉइंट के नीचे कॉल बायर, आई एम रिपीटिंग, ब्रेक इवन पॉइंट के नीचे call buyer will lose his premium. Break even point के नीचे call buyer will make a loss of premium paid. Break even point के ऊपर, break even point के ऊपर, okay, what will happen? Break even point के ऊपर what will happen? Okay, first let's talk about break even point के नीचे. ब्रेक इवन पॉइंट के नीचे जो कॉल बायर है उसको लिमिटेड प्रीमियम का लॉस होगा, लिमिटेड लॉस होगा ऑफ प्रीमियम पेड. और ब्रेक इवन पॉइंट के नीचे द कॉल सेलर विल गेन द प्रीमियम दैट द बायर हैज पेड. सो बिकॉज बायर उसके पास जाएगा नहीं, राइट? तो ही हैज अ लिमिटेड प्रॉफिट. ब्रेक इवन पॉइंट के नीचे call buyer has a limited loss of premium paid and call seller has a limited profit of premium received. Is it clear? Break even point के ऊपर, break even point के ऊपर call buyer will have unlimited profit and call seller will have unlimited loss. Clear? Okay, is this clear, guys? Just take a short snapshot of this. Okay, take a snapshot of this. सो यू नो ब्रेक इवन पॉइंट के नीचे ये है, ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर ये है, ठीक है? सो ब्रेक इवन पॉइंट के नीचे ये सब, ये पूरा करने का कोई एडवांटेज ही नहीं है, बिकॉज अभी आपने जो कॉन्ट्रैक्ट किया भाई उससे तो करंट मार्केट प्राइस नीचे है, सो उसमें एग्जैक्टली कोई एडवांटेज ही नहीं है, ठीक है? सो ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर कॉल बायर विल मेक अनलिमिटेड प्रॉफिट, कॉल सेलर विल मेक अनलिमिटेड लॉस. ब्रेक इवन पॉइंट के नीचे call buyer will make limited loss and call seller will make limited profit. Clear, guys? Take a snapshot of this. I'll see you guys again at 11:30. Let's take a short break. Abhi whatever we have learned, just
take this, basically let this settle down in your head, and we will come back again. Okay, see you all at 11:30. Bye bye. To sell. They have no obligation. What will they say? ठीक है, मेरा प्रीमियम रख लो, मुझे नहीं करना है transaction. He can do that and he's allowed. Okay. Now, seller. Clear guys, call option and put option. कोई भी अभी डाउट नहीं होना चाहिए. कोई भी अगर डाउट है, रिमेंबर माई स्टोरी, पूरे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे. ओके, खाली मेरा स्टोरी आप याद रखिएगा, पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा. ओके, सो आप 3 घंटे में कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन दोनों समझ गए एंड द डिटेल्स. ओके, Ashok, which last part do you want me to repeat? Sorry, I'm not able to get the chat. Yeah, I got it. Okay. Yes. Buyer of the put option is the writer. Buyer of the put option. Sneha, that's going to be difficult, my dear, because Pura, I can't explain since morning. We have to finish something. I request you to please see the recordings. Pura, I cannot explain in short. It's difficult. Yeah. The buyer of the put option is the writer. Buyer of an option is never a writer. Yes, recordings will be given. Recordings will be available. Yeah. So, yes. So, is the buyer of the put option the writer? So, the buyer of the stock is the writer. And the seller of the stock is the buyer of the put option. Okay.
Understand this. Come on, let's do this exercise. Now, advantage of buying a 260 put at 10 rupees. What is the current market price? Beginning of the expiry, 260 rupees of the XYZ stock. ओके ये जो XYZ स्टॉक है उसका प्राइस क्या है 260 रुपीज, प्रीमियम है 10 रुपए का. नाउ ये जो XYZ स्टॉक है वो एक्सपायर हुआ है 220 में. ओके एंड वी हैव बॉट, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट अ पुट ऑप्शन ऑफ 260 स्ट्राइक प्राइस एंड प्रीमियम इज 10 रुपया. ओके, इज एवरीबडी अंडरस्टैंडिंग दिस सिचुएशन? गाइस प्लीज रिस्पॉन्ड. ओके लेट्स डू दिस एक्सरसाइज तो एकदम पूरा क्लियर हो जाएगा. ओके सो ये XYZ स्टॉक है which has a strike price of 260. We are talking about उसका put and उसका premium is 10 rupees. All right. So now ये जो stock है 260 वाला, premium is 10 rupees. Okay, premium is 10 over here. All right. So put 260 put at 10 rupees premium. All right. अभी ये जो XYZ stock है जो 260 का था, now expiry पे 220 बन गया. मतलब it crashed 20 rupees. 40 rupees, I'm sorry. How much did it crash? 40 rupees. So does this, ये पूरा put option में advantage है? Yes. What is the advantage? Advantage of 40 rupees, correct? Yes or no? Advantage है कि नहीं 40 rupees का? Correct? There is an advantage of 40 rupees. How? 260 minus 220. ये जो price जो 260 का, now you have the right to sell. आपके पास एक card है जिससे आप ये जो स्टॉक है XYZ स्टॉक है आप 260 में बेच सकते हो, जिसका कारण मार्केट प्राइस आज 220 है. एडवांटेज है कि नहीं है? है ना? 40 रुपीज का एडवांटेज. ओके यस. सी रामकृष्णा, अंडरस्टैंड वन थिंग. व्हाट इज इट? यू आर होल्डिंग अ कार्ड. वो कार्ड क्या है जिसके ऊपर लिखा है भाई आई कैन सेल माई स्टॉक एट 260 रुपीज. आज करंट मार्केट प्राइस क्या है? 220 रुपीज. सो करंट मार्केट प्राइस से आप 40 रुपया ज्यादा में बेच सकते हो. तो वो ऑप्शन, वो कार्ड में कुछ एडवांटेज या दम है कि नहीं है? है ना? बिकॉज करंट मार्केट प्राइस से आप 40 रुपया ऊपर में बेच सकते हो. सो दैट्स योर पुट ऑप्शन. राइट टू सेल है आपके पास, आपके हाथ में. आप बेच सकते हो 260 में जिसका प्राइस आज 220 है. ओके सो देयर इज एन एडवांटेज ऑफ 40 रुपीज इन दिस कार्ड. करेक्ट? नाउ you have to buy this advantage, you paid 10 rupees. So आपका net advantage कितना हुआ? 30 rupees. Net advantage 30 rupees. Correct? Lot size यहाँ पे ये 3500 का lot size है. So you made a profit of 1,05,000. How profit? Because today you were holding a put option जिसमें advantage था of 40 rupees, you paid 10 rupees, so you have a net advantage of 30 rupees. Okay? Sanjay, can you please stay with me? Far away strike price. We are understanding concept. Okay, so let's not deviate. Because क्या होता है, when you think ahead, you're not understanding what I'm saying right now. आपका दिमाग किधर और चल रहा है. You stay with me, guys, everybody. That's what I've been constantly saying. Please stay with me. I'm trying to explain concepts over here. We are not taking trades. अब सिखाया ही नहीं है मैंने to take trades. You've not understood the entire theory. How can we get into trading? Oh, possible नहीं है at this stage. Okay? Yes. You must have an open mind and try and understand what I'm trying to talk. Okay? Just stay with me. Because understand one thing, in 3 hours you've understood such a big concept. जो आप बुक लेके बैठो आप, यू आई गारंटी यू विल नॉट अंडरस्टैंड इन 3 hours. Complete details में you've understood that, right? So try and intercept, try and absorb what I'm trying to say. Okay, after that you have a question, then you tell me, and let's keep the questions relevant to what I'm teaching. Okay, let's not go into expiries and call options and put options, and let's not get there. Okay? Yes. So now you have an advantage of 40 rupees, correct? Now ओके सो अभी इसका प्रॉफिट है तो उसका लॉस होगा. यस और नो? मिरर इमेज ऑलवेज होगा, राइट? पुट ऑप्शन और पुट सेलर का ऑलवेज मिरर इमेज होगा. एक का प्रॉफिट एक का लॉस. करेक्ट? बिकॉज नाउ दिस गाय, ओके, अभी मार्केट प्राइस जिसका 220 है उसको
बाय करना पड़ेगा 260 में। क्यों? क्योंकि उसने बाय करने का कमिटमेंट लिख के दिया है। उसने बाय करने का कमिटमेंट लिख के दिया है। बिकॉज उसने बाय करने का कमिटमेंट लिख के दिया है, उसको बाय करना पड़ेगा एट 260 रुपीज, जब भी करंट मार्केट प्राइस 220 है। तो उसको लॉस हुआ नहीं हुआ? हुआ ना, बिकॉज he'll have to buy it for much higher price when the current market price is only lower. बट उसको 10 रुपया उसने ये पूरा ट्रांजैक्शन करने के लिए उसने लिया था, सो उसका लॉस उतना कम हो गया। सो ही हैज अ लॉस नाउ ऑफ 30 रुपीज into the lot size. Okay, now if the expiry is at say 230 rupees, see I'm giving you these varied examples so you all understand the concept, और कुछ नहीं है। Okay, this is just for understanding the concept of profit and loss, कि क्या profit होता है, क्या loss होता है। Okay, and what is the advantage, what is not the advantage, we are just basically understanding concepts, these are not trades। Okay, different situations में क्या होता है, we are only trying to understand that part। सो 260 रुपीज। ओके, सो आपने तो बाय किया है 230 में, लेकिन एक्सपायरी 260 में आपने पुट बाय किया है, लेकिन एक्सपायरी हो गया 230 में। ओके, इट लूज नॉट लूज। विजय, आई डिडंट अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन। ओके, फाइन, थैंक यू। सो इफ ये 260 से हो गया, बेसिकली you will this thing, okay, so you have an advantage of 30 rupees, correct? What is that? You will have an advantage of 30 rupees for doing this, right? Now you have already, there is a premium paid over here of 10 rupees, so net advantage ho gaya 20 ka, okay, into the lot size. Now this guy also, usko loss hai kitne ka? 30 rupees ka, premium he is received of 10 rupees, so he basically got made a loss of 20 rupees. Now this one 240, now 260 mein he has the right to sell, jiska current market price hai 240, correct? So basically he had, there is an advantage of 20 rupees, 10 rupees का प्रीमियम है, एंड 10 रुपीज का यहाँ पे बेसिकली प्रीमियम पे किया है, तो नेट नेट प्रॉफिट 10 रुपीज का इसने रिसीव किया है, तो इसका लॉस 10 रुपीज का। ओके, सो 260। ओके, कम, हाँ, नाउ लेट्स कम टू 250। नाउ 250 एंड 260, 260 का पुट ऑप्शन है, 10 रुपीज में बाय किया है, प्राइस हो गया 250 का, तो एडवांटेज है, यस, एडवांटेज ऑफ 10 रुपीज। लेकिन ये एडवांटेज इज नाउ नो लॉन्गर वैलिड, उसमें प्रॉफिट या लॉस कुछ नहीं होएगा, बिकॉज वो तो प्रीमियम में चला गया। ये जो 10 रुपीज का एडवांटेज था, दैट गाय ही ऑलरेडी पेड दैट एडवांटेज ऑफ योर्स प्रीमियम, एंड इसका लॉस हो रहा था 10 रुपए का, करेक्ट? तो वो प्रीमियम में कवर हो गया। सो बोथ ऑफ देम आर एट नो प्रॉफिट नो लॉस at 250 rupees. So what is the break even? Break even is going to be 250 rupees. Okay, so now call option में क्या था? Below the break even, the call buyer was making a loss of premium paid, correct? Call option में क्या था? Below break even, call option buyer was making a loss of premium paid, and call option seller was making a profit of premium received, correct? Above break even, call option buyer unlimited profit ले रहा था, and call option seller unlimited loss ले रहा था। यहाँ पे एकदम उल्टा हो रहा है। okay, at 260 there is no advantage, मतलब ये पूरा ट्रांजैक्शन करने में एडवांटेज ही नहीं है, क्योंकि भाई 260 का पुट ऑप्शन लिया और एक्सपायरी भी 260 में हुआ, तो हाउ डज इट मैटर? ओके, सो ये पूरा ट्रांजैक्शन करने में एडवांटेज है ही नहीं, एडवांटेज है नहीं, लेकिन पूरा प्रीमियम इन्वॉल्व हो गया। बायर, जो पुट ऑप्शन बायर है, उन्होंने प्रीमियम पे किया, तो अभी उसका लॉस हो गया, एंड ये जो पुट ऑप्शन सेलर है, उसको ही रिसीव द प्रीमियम, right? So he made a limited profit of premium received above the break even point.
correct? Above the break even point, he will make a limited profit or premium received. Okay, and the call option, the put option buyer will make a limited loss of premium paid. Why like that? क्योंकि current market price अगर उसका committed to sell price से ज्यादा है तो obviously वो open market में बेचेगा ना, थोड़ी ना कम में बेचेगा. Okay, so he is definitely going to buy sell in the open market and not sell to the put seller because उसको कम में बेचना पड़ेगा. करेक्ट? अगर करंट मार्केट प्राइस, क्यों नहीं समझ आया सिकंदर? अगर करंट मार्केट प्राइस 280 है, सिकंदर, ओके, आई एम टॉकिंग टू यू नाउ, यू आंसर. करंट मार्केट प्राइस 280 है और आपने किसी को कमिटमेंट दिया है कि भाई मैं कि अगर कोई आपसे लिख के आपको देके गया है कि भाई मैं आपसे ना 260 में बाय करूंगा, यू से ठीक है, ट्रांजैक्शन सील्ड एट 10 रुपीज, 260 में ही इज गोइंग टू कम एंड बाय फ्रॉम यू. लेकिन अभी आपको ऑप्शन मिल रहा है टू सेल एट 280, तो आप क्या करोगे? 280 में बेचोगे कि वो कार्ड पकड़ के बैठोगे आप 260 वाला? क्या करोगे आप सिकंदर? सिकंदर आप क्या करोगे? आप 280 में बेचोगे कि आप 260 में बेचोगे? सेल तो आपको करना है, आप सेलर हो, यू वांट टू सेल योर इन्वेंट्री. ठीक है, आपके पास स्टॉक है, आपके पास जो भी है आपको बेचना है. ओके, यू आर अ सेलर हियर. नाउ you when you want to sell, you will sell at 280 or 260? 280 ना, करेक्ट? सो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट दिस इज. तो 280 में आप बेचोगे तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे ना भाई जाने दो भाई, तुम्हारा प्रीमियम 10 रुपए का, मेरे को तुमको नहीं बेचना है. आई हैव द राइट टू सेल, आई हैव नो ऑब्लिगेशन टू सेल, आई एम अ पुट बायर, राइट? सो व्हाट विल यू से? भाई मुझे आपको नहीं बेचना है, आप मेरा प्रीमियम रख सकते हो. और आप क्या करोगे? आप अब उधर 10 रुपए का आप लॉस ले लोगे, उनसे ठीक है जाने दो ना, प्रीमियम प्रीमियम का भले लॉस होए, और मैं जाके ओपन मार्केट में बेचूंगा 280. I will yet stand to gain 10 rupees. Correct? So this is what it is. All right. So yes, open market में आप जाके बेचोगे 280 में, आप क्यों उधर? Why will you get tied down? Okay. Yes. So I hope everybody has understood the profit and loss of a call of a put buyer and a put seller as well. This is, that was a right to buy, put is a right to sell. Okay, buyer has all the possible rights and no obligation. Option seller has all the possible obligations and no rights. Clear, guys? Now, correlation. Okay, we were talking about correlation. Let me go back there. Okay, let's do the break-even points first. Break-even point. What is a break-even point? Can somebody tell me? Break-even point is a point where there is no profit, no loss. We understood break-even point, right? No profit, no loss जो point होता है उसको break-even point बोलते हैं, दोनों का. Call buyer और call seller. At this point कोई profit नहीं है, कोई loss नहीं है, पूरा 0-0 transaction है. तो call option का break-even point क्या है? What is the break-even point of a call option? Strike price plus premium. Okay, take a snapshot of this if you want. Break-even point of a call option is strike price plus premium. Took a short snapshot, everybody? Done? So you understood the break even, लेकिन ये मैंने पूरा formula में डाला हुआ है. Okay, great. So now break even of a put option. Break even of a put option is strike price minus premium. Got it? Break even of a put option is strike price minus premium. Got it, guys? Okay. Now, done.
This is the payoff graph. This is the payoff graph. What is a payoff graph? अभी एक, if you see this, okay, this is the x and the y axis. This is the break-even point. Break-even point is always going to be at, sorry, at zero levels. Break-even point is always going to be at zero over here. Okay, below zero आपका loss record होता है, above zero आपका profit record होगा. Now this is your stock price, obviously going from 0 to 100. Okay, on the number line it goes from 0 over here and it goes up to, I mean, I'm just hypothetically, it's a rising stock price. Correct? Agar 100, 120, 200, 130, 140, 150, 60, 70, 80, 90, 100. Okay. So if you have bought a stock here, the prices go up above break even, you are getting unlimited profit. अगर prices नीचे, यहाँ पे आपका buy price है, buy price में stock को पहले यहाँ से ऊपर जाना पड़ेगा, correct? प्राइस को ऊपर जाना पड़ेगा. जैसे प्राइसेस ब्रेक इवन को क्रॉस करते हैं, देन यू विल हैव अनलिमिटेड प्रॉफिट्स ऑन द अपसाइड. ये लॉन्ग कॉल है, करेक्ट? एंड अगर यहाँ पे आपने बाय किया और अगर प्राइसेस नीचे क्रैश हो गया, ओके, सपोजिंग आपने 140 में बाय किया, अभी 130, 120, 110, 100, 90, जैसे जैसे प्राइसेस क्रैश हो रहे हैं, आपका ये देखिए तो आपका लॉस का लाइन पूरा सीधा हो गया, because you have limited loss to premium paid. So what is a payoff graph? Payoff graph is a graphical representation of your profit and loss. Okay, ये देख के, because ये तो एक सिंगल लेग है, अभी आप इसके अंदर 3-4 लेग्स मिक्स करोगे, आप पूरी स्ट्रैटेजी बनाओगे, करेक्ट? सो आप ये जब ये पूरा स्ट्रैटेजी आप दिस थिंग स्ट्रैटेजी बनाओगे, तो आपको पता कैसे चलेगा कि अल्टीमेटली इसका प्रॉफिट एंड लॉस है क्या. तो when we feed in all the entire trade, वो पूरा अपने करेंगे नेक्स्ट टाइम. ओके, तो ये ऐसे पे ऑफ ग्राफ पूरा बनता है, which tells you, जो देख के आप उसको आप इसको देख के बता सकोगे कि भाई इसमें मेरा लॉस लिमिटेड है और प्रॉफिट अनलिमिटेड है. ओके, सो दिस इज द पे ऑफ ग्राफ ऑफ अ लॉन्ग कॉल. ओके, सो Edwin, ma'am, please explain what is long and short call. I'm sorry, my friend. I cannot right now at this point go on to what is long and short call. We did that all morning. 11 baje tak wo kiya tha. So I request you to please see the recording, because right now I cannot. There are 108 people here on the class. I cannot waste everybody's time. Correct? Everybody has understood what is a long call, short call, long put, short put, right? So request you, my friend, to please listen to the recordings, right? Once you get there. So yes, so that is basically the PNL of the payoff graph of a long call. All right, long call is buying a call. That's a short call. Okay, what is a short call? A sell call is basically short call. So the belief is that the stock is going to fall, right? Now over here, now let's get to this first. Yes, what is the belief when you buy a call? When you go long call, you will go long call. You have a bullish outlook. You have a bullish outlook. आपको ऐसे लग रहा है कि भाई ये जो मेरा अंडरलाइन है, मेरे एग्जाम्पल में मेरी स्टोरी में बुक था, यहाँ पे स्टॉक होगा, राइट, या इंडेक्स होगा. सो व्हेन यू आर गोइंग लॉन्ग अ स्टॉक और लॉन्ग अ बुक, यू हैव अ वेरी बुलिश आउटलुक. यू थिंक कि आपने जो बाय किया है वहां से प्राइसेस ऊपर जाने वाले हैं, करेक्ट? दैट इज व्हाई यू आर गोइंग टू गो लॉन्ग कॉल. Now, risk is limited to premium paid and unlimited maximum reward. Now, short call, or now short call is also called a sell call. Short call is also called call writing. Why is it called call writing? Because the seller is going to write and give you the contract. Okay, the person who writes the contract is a writer or a seller.
Okay, so call seller is also called a call writer. So what is the payoff of a short call? So what is a short call? अगर if the prices go down, ये आपका stock price है, buy किया है आपने, अगर prices यहाँ से नीचे जा रहा है, so you are going to make a limited profit of premium receipt. Okay, the call seller is going to make the guy who has shorted or who sold is going to make a profit of limited profit of premium receipt. If the prices start rising up, ओके प्राइसेस यहाँ से राइज हो रहा है तो प्लॉट हो रहा है, 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 करेक्ट. सो इफ द प्राइसेस स्टार्ट गोइंग अप, उसने जो पहले प्रीमियम उसने रिसीव किया था वो धीरे धीरे देगा 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 देगा. नाउ दिस कम्स अ पॉइंट, वहां पे देर इज नो प्रॉफिट नो लॉस. वहां से अगर प्राइसेस ज्यादा ऊपर गया, ही इज मेकिंग अनलिमिटेड लॉस. Got it, guys? So this is the payoff of a short call or a call seller. Now let's do this for a long put. Okay, now long put or a put buyer. Now, so the belief is, why will a person buy a put? Why will you want to book an exit price right now? Because आपको ऐसे लग रहा है कि prices नीचे जाने वाले हैं, right? So what is it? You think that the prices are going to go down. इसलिए you want to go and book a, yes, a bearish mindset. That is why you want to go and book an exit price for whatever you're holding. Or even if you're not holding anything, you want to go and sell. Okay, because you think that the prices are going to go down. Now, so belief is that the stock will fall. You are bearish. Risk is limited to premium paid. Always. Buyer ka risk is always going to be limited to premium paid. And unlimited maximum profit up to as the price is if the stock starts falling. ओके, सो यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट आ गया, आपने यहाँ पे पुट बाय किया है. ओके, इफ यू बॉट द पुट हियर, अगर प्राइसेस ऊपर चले गए तो आपको क्या होगा? लिमिटेड लॉस टू प्रीमियम पेड. अगर प्राइसेस क्रैश होना चालू हुए, यहाँ से प्राइसेस अगर क्रैश होना चालू हुए, तो व्हाट विल हैपन? यू विल डेफिनेटली मेक unlimited profits. पहले you need to recover your premium, उसके बाद you will make unlimited profits as the prices start crashing down. Got it, guys? Okay, now short put, that's a long put, that's a short put. If you see, दोनों एकदम mirror image है. देखिए, if you have basically gone and bought a put here, okay, sold a put here, that was a buy, that's a sell. If you have sold a put here, तो अगर prices ऊपर जा रहे हैं, अगर prices ऊपर जा रहे हैं, you are making a limited profit of premium received. Yeah, above zero is profit, below zero is loss. Yes or no? मैंने क्या बोला था? Above zero is profit, below zero is loss. So यहाँ पे you are making a limited profit of premium receipt. जैसे प्राइसेस नीचे जा रहे हैं, आपका जीरो लाइन आ गया, ब्रेक इवन, एंड देन अनलिमिटेड प्रॉफिट, अनलिमिटेड लॉसेस एज द स्टॉक स्टार्ट्स गोइंग डाउन. गॉट इट, गाइस? Did you all understand what the payoff graph means? We will see a lot of payoff graphs. This is just understanding the concept. काफी सारे अपने पे ऑफ ग्राफ्स देखेंगे. हर एक स्ट्रैटेजी का अलग पे ऑफ ग्राफ होगा. ये आपको बनाना है नहीं, आपको नहीं बनाना है. आपको खाली ट्रेड्स अंदर डालने हैं, सॉफ्टवेयर आपको बना के देगा. आपको खाली अंडरस्टैंड करना है. जस्ट टू बाय सीइंग इट यू विल अंडरस्टैंड कि भाई इसका प्रॉफिट एंड लॉस है क्या, इसका पे ऑफ ग्राफ दिखता कैसे है. Okay, हर एक strategy is going to be this thing below this thing. It will have a different payoff graph. Since prices cannot fall below zero, why will there be an unlimited loss? Can you please explain, Vijay? In this case, the prices are rising, na? That's why unlimited loss. So max fall is limited to zero in whose case? Buyer's case, not the sellers.
not the sellers, na? How can sellers' loss be limited to zero? As the prices start going down, the guy will have unlimited loss. And if you're talking about the stock being zero, there is an expiry period also. So in that expiry period, you think stock zero हो जाएगा? जो optionable stocks है वो होते तो नहीं, because not all stocks are optionable. Okay, not all stocks are optionable. There is a list of stocks which are optionable, and वो stock zero तो नहीं होते हैं ना विजय, because आप unlimited time के लिए नहीं hold रख रहे हो. You are holding it on basically this thing ना, एक महीने के लिए आप कर रहे हो, मैक्सिमम तो 3 महीने में ले रहे हो आप. तो you will be understanding. Are you understanding, right? Okay, fine. So now let's talk about this concept of open interest. Yeah. So what exactly is open interest? So open interest is basically the number of open contracts in a cycle. Okay. Open interest is the number of open contracts in a cycle. Now, good. So let's take a situation. Supposing Reliance at 2600. Okay, since we're talking about Reliance is at 2600. Okay, let's talk about a situation about what's happening in the market. Reliance 2600 पे है, आपका व्यू है कि Reliance is going to go up to 2650. Okay, 2650 पे Reliance is going to go up. Now, Wilmar buys a contract from Edwin. Okay, Wilmar buys a contract. Okay, same thing. Chalo, from Edwin. We're buying it from the open market. Actually, there are not two people you're buying it, but okay, there's always a transaction between two people. All right. So Wilmar buys it from Edwin. How many contracts are open in the market? She buys 2600 ka call option from Edwin. Okay. So she wants the right to buy Reliance at 2600 because unko lagta hai that prices are going to be at 2650 at expiry. She's very bullish. So she goes to Edwin. I mean, she buys and she pays a premium of say 5 rupees. Okay, or let's keep it 10 rupees. Okay, easy. So she gives a premium of 10 rupees to Edwin. How many contracts are open in the market? How many contracts are open in the market, guys? One contract. Super. One contract. No, one contract. एक ने बाय किया, एक ने सेल किया, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट तो एक ही था ना, करेक्ट? नाउ सो विल्मा इज होल्डिंग अ कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट हाथ में है. फिर प्राइसेस और वो कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस है 10 रुपीज. शी हैज पेड 10 रुपीज फॉर दैट. नाउ प्राइसेस ऑफ रिलायंस, टारगेट क्या है रिलायंस का? 2650 इज द टारगेट. ठीक है. सो प्राइसेस नाउ 2600 से हो गया 26.5 टू 26.5 या से 26.10 हो गया. सो प्रियंका ने थोड़ा सोचा, अरे यार ये तो प्राइसेस रिलायंस के ऊपर जा रहे हैं, आई थिंक 2650 जाएगा, लेट मी गो एंड बाय अ कॉन्ट्रैक्ट. So she will also go and buy a contract in the market. She will open a contract. Now how many contracts are open in the market? 2. Tanmay goes and he also, then now prices of Reliance became 2615. Target is at 2650. Tanmay gets attention. कह रही यार ये तो कुछ हो रहा है, Reliance ऊपर जा रहा है. I want to buy Reliance.
he will also open a contract. Open interest ki open contracts 3. Prices further go up. 2620. Okay. And Vishal says that, Arey yaar, ye to 2650 jayega. I want to buy a contract. He also goes and buys a contract. So now everybody is buying a contract. Everybody is buying a contract. So what is happening? No, they are not selling internally. They are buying new contracts. Nobody is squaring off their contracts. People are buying more contracts. Obviously, when they're buying, somebody is selling to them. But they're not squaring off contracts. They're opening new contracts. Okay? Everybody is opening a new contract as the prices are going up. Now Reliance ho gaya 2625. Again, new contracts people are opening. 2630 new contracts are being opened because target is what? 2650. 35. Okay. 2635. Again, new contracts are getting open. 2640. New contracts are getting open. So as the prices are going up, you feel new and new and new and new contracts are opening. और जिन्होंने भी बाय किया है ना वो स्क्वायर ऑफ नहीं कर रहे, नए नए लोग मार्केट में आ रहे हैं, नए नए लोग मार्केट में आ रहे हैं और कॉन्ट्रैक्ट्स खोल रहे हैं, लेकिन जो पुराने लोग जिसने बाय किया है वो स्क्वायर ऑफ नहीं कर रहे, वो होल्ड करके बैठे हुए कॉन्ट्रैक्ट्स. एंड न्यू पीपल आर कमिंग एंड ओपनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स. इज एवरीबॉडी अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन? So prices ऊपर जा रहे हैं and new contracts are getting added in the market. So open interest is rising. What is open interest? Number of open contracts in the market. Open interest is rising, prices are rising. That is called long build-ups. What is that called? Long build-ups. Market में long build-ups हो रहे हैं. मतलब people are opening their position, they are opening towards the long side. Now tell me one thing. At 2650 टारगेट है सबका. तब जनरली मार्केट में मोटा मोटी सबका टारगेट सेम ही रहता है, अप एंड डाउन लिटिल बिट हियर एंड देयर. सो अगर 2650 आ गया and if you've opened a contract, what will you do at 2650? Your target has come. What will you do? At 2650, what will you do? Your target has come. Yes, you will exit your position because your target has come. करेक्ट. सो आप एग्जिट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यस, आप स्क्वायर ऑफ करोगे. तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपने जो बाय किया है तो आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? आपने बाय किया है कॉन्ट्रैक्ट तो आप सेल करोगे. एग्जैक्टली. तो आपने सेल क्यों किया? स्क्वायर ऑफ करने के लिए आपने सेल किया. वर यू बेरिश एंड यू सोल्ड? नो, यू आर स्क्वायरिंग ऑफ योर पोजीशंस. तो कैसे पता चलेगा कि पोजीशंस मार्केट में स्क्वायर ऑफ हो रहे हैं? ओपन इंटरेस्ट विल स्टार्ट कमिंग डाउन. Yes or no? Open interest market में because now internally everybody is now squaring position सब काट रहे हैं. तो जो इतना सारा open interest build up होएगा वो नीचे कम आएगा नहीं आएगा? Because सबने positions अभी square off करने चालू हो गए तो open contracts market में कम हो गए. Correct? So that is called long unwinding. What is that called? Long unwinding हो रहा है market में. Long unwinding कब होता है? जब target आ जाता है market का. Okay. Now ये कहाँ से आप will as I said, stay with me. All answers will be answered. We'll go on to the option chain. Did you understand, guys? That is called long unwinding. People are squaring of their long positions. That's called long unwinding. Did you understand that? Now ballpark figure is 10% rise in open interest and 2% rise and fall in price. छोटू मोटू इधर उधर is not counted. All right, लेकिन substantial 10% अगर rise हो रहा है open interest में और 2% rise हो रहा है price में. We will come up to that on the next slide. Okay, let's understand this first. That is called open interest is rising. That means new contracts are getting opened in the market. How do we know it is long or short? अगर open interest rise होता है और साथ में price भी rise होता है, that means long build-ups हो रहा है. Now, let's talk about another situation. 2600 Reliance का price है. Now target is 2550. ये दूसरी situation में क्या हो रहा है? Target अभी है 2550. All right. So जब 2550 हो रहा है, so 2600 से now price happened. So people bought at say
Satyapal bought at 2600. Okay, you opened a contract at 2600, a bearish contract. Prices became 2590. Okay, Manish went and opened one more contract at 2590. Prices became 2585. More contracts started getting opened. 2580. More contracts are opening. So open interest is again rising. People are opening contracts. Open interest is rising. लेकिन साथ में क्या हो रहा है? Prices नीचे जा रहे हैं. That means that is short buildups are happening in the market. When open interest is rising and prices are going down, that means short buildups are happening in the market. Is everybody understanding? सब जैसे जैसे price नीचे जा रहे हैं, new people are entering the markets and opening contracts. ओके और लेकिन जो एग्जिस्टिंग जिसने पहले कॉन्ट्रैक्ट ओपन किया है वो स्क्वायर ऑफ नहीं कर रहे, वो होल्ड करके बैठे हुए. करेक्ट, वो स्क्वायर ऑफ नहीं कर रहे हैं, होल्ड करके बैठे हुए. नए नए लोग आ रहे हैं मार्केट में और कॉन्ट्रैक्ट्स खोल रहे हैं. ओपन इंटरेस्ट राइज हो रहा है और प्राइसेस नीचे जा रहे हैं. दैट मींस देयर इज अ शॉर्ट बिल्डअप हैपनिंग इन द मार्केट. इज एवरीबडी विथ मी? Is everybody with me? Yes. So there is a short buildup happening in the market. अभी नाउ प्राइसेस जैसे जैसे प्राइस नीचे गए, ओपन इंटरेस्ट बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, प्राइसेस नीचे जा रहे हैं, मतलब शॉर्ट बिल्डअप होते गए. नाउ क्या होगा एट 2550? व्हाट होगा, क्या होगा 2550? एट 2550 व्हाट विल हैपन? टारगेट था 2550 का, क्या होगा? Short covering. Yes, people will square off their short positions. People will exit. ओके जो सेल किया है पहले अभी वो बाय करेंगे और उसका पोजीशन वो स्क्वायर ऑफ करेंगे. करेक्ट. सो ओपन इंटरेस्ट विल कम डाउन. यस और नो? ओपन इंटरेस्ट विल कम डाउन. क्यों? क्योंकि नाउ पीपल आर स्टार्टिंग टू स्क्वायर ऑफ देयर पोजीशंस. पहले ओपन कर रहे थे इसलिए ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा था, अभी ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा है. क्यों? क्योंकि सब पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं. Okay, so that is, and prices will also go up because people are buying, right, to square off. That is called short covering. Now let's go on to the next slide. Now see this. When open interest goes up, take a snapshot of this. Okay, when open interest goes up, prices go up. That means positive outlook hai aur long build-ups ho rahe markets. Okay, when open interest go up and prices go down, that means short build-ups हो रहा है market में and market का outlook bearish है. Okay, now market का outlook is negative or bearish or whatever you say, right? So basically जब भी open interest बढ़ रहा है, that means कोई decision market एक direction में चल रहा है. Some build-ups are happening in a particular direction when open interest is rising. Okay, so open interest rising, price rising, that means a positive build up and like a bullish build up is there. Open interest rising मतलब contracts खुल रहे. Open interest rising only means के contracts नए खुल रहे. Okay, new open contracts are new people are coming and entering the markets and opening contracts. Now with that, if the prices are going down, that means it's negative or there is a short build up happening in the markets. Now is this clear guys? इतना? Now ओपन इंटरेस्ट कम हुआ मतलब व्हाट? स्क्वायर ऑफ चालू हो गया पीपल का. टारगेट आ गया. टारगेट आ गया, स्क्वायर ऑफ हैज स्टार्टेड. सो नाउ व्हेन ओपन इंटरेस्ट गो डाउन एंड द प्राइसेस गो अप, that means it is mildly positive because वो downside target आ गया. That's why it's a short covering happening. So short covering में लोग क्या करेंगे? Buy करेंगे ना? Yes or no? People will have to buy na to cut their short positions. So when everybody comes to buy, prices will go up na, and open interest will go down. So mildly positive, or that's a short covering happening in the market. Now, if the prices open interest goes down and the price also goes down, तो अगर आपने buy किया है तो आप exit कैसे करोगे आपका buy position? Sell करके, right? You'll have to sell ना to close your buy position. Yes or no? इतना सन्नाटा क्यों है? Sell, unwinding, correct? So then you will have to square off your long position to you'll have to sell to square off your long position, right? So that is mildly negative. Why is it mildly negative? कि भाई चलो आपका target आ गया, अभी यहाँ से ऊपर जाएगा नहीं जाएगा, we don't know. That's why people are exiting their positions. Okay, so just take a snapshot of this. So this gives us an idea.
on the long and short build-ups. Okay, now if people are done with the snapshots, we'll go on to the option chain. Done with the snapshots, guys? Okay. Great. So I'm just going to stop share and I'm going to start the option chain for you. Can everybody see the option chain? Best. Can you all see the option chain? Okay, great. So this is what your option chain looks like. That's the maximum zoom. I can't zoom in more than that. My whole screen is full. Okay. So ये NSE website है. Okay. ये पूरा NSE website है. Just go on to the NSE website. Just start the option chain. यहाँ पे मिल जाएगा आपको. Go on to it. Now I'll explain this option chain to you. Okay. ये real time है. This gets updated. You know, it's got a few minutes lags. लेकिन it gets updated real time. जैसे market चालू होता है ये पूरा real time update अपने आप होते जाता है. ये NSE का website है. Let me explain this to you. ये देखो यहाँ पे you see the underline. That's where you will get your index. ये Nifty का option chain है. You want a stock. You see this. इस stock का पूरा आपको list मिल जाएगा. These are all the optionable stocks. All stocks are not optionable. Okay, there is a list of stocks which are optionable and you will get this list from here. Now this is the expiry. Now indices have weekly expiries. Okay, indices have weekly expiries and stocks have monthly expiries. Indices you can also have, ये देखिए पूरे expiries है. You can choose which expiry you want to do. Indices Nifty, Bank Nifty में weekly expiries है, monthly expiries भी है. Okay, and in Nifty and sorry in stocks you have only monthly expiries which are open for 3 months, near, next and far. Strike price यहाँ से मिल सकती है, but yeah you can also choose the strike price from here. Now that's the open interest. ये column दिख रहा है आपको OI का, ये open interest है, ये change in open interest है, ये volume है, ये implied volatility. Now this side is the calls. ये पूरी side calls है and ये पूरी side puts है. Okay, that's basically the last traded price. That's the strike price बीच में. Bid price है, ask price है, the way you have in your market watch, bid and ask and quantity. ठीक है, so you have the bid, ask, quantity. ये पूरा आपके market watch में जैसे है same it is. Change is over here. Change in the last traded price is right here. Okay, so is everybody understanding what this looks like? यहाँ पे पूरा put side है. This is a put side. That's the strike price. You have the bid quantity, bid price, ask quantity, change in open interest, last traded price, IV, volume, change in open interest and open interest of the put size. Got this, guys? Okay. So now let's see this. Now, why is this we are doing in some time? Let's just see the quickly. Let's see the open interest. Okay. लास्ट ट्रेडेड प्राइस कौन सी ट्रांजैक्शन, कौन से प्राइस पे लास्ट ट्रांजैक्शन हुआ है इंद्रनाथ? LTP is last traded price. IV don't get into it right now and we never see the IV from here, option chain ever. Okay, LTP is last traded price. ये strike का प्राइस कौन, ये strike है, that's the strike. तो 17,180 का कौन सी प्राइस में ट्रेड हुआ है? That's what it is. So we can go to Reliance. Since we are talking about Reliance, ठीक है? So let me go to Reliance. That's the option chain of Reliance. You're seeing this?
So Reliance ki price will come here 2690, 2600.90. So 2600 we've been talking about. That's what the underlying price. Are you seeing this? Underlying price on the 25th of May, and the time is also written. So constantly this keeps getting updated. Okay, so you know that what time the prices are there. Okay. excuse excuse me. Now let's see the open interest. That's the open interest column. The open interest column hai. Let's see the open interest column. So where are you seeing the maximum open interest? Where are you seeing the maximum open interest? Which strike? Let's see the call side. Where is the maximum open interest on the call side? $2,600. Maximum open interest is at 2,600. So what does that mean? Generally, open interest is built at, who's at 2,700? 2,700 either hai, kidhar hai open interest. So 3,879 is more than 6,880. Open interest. We're seeing the number of open contracts. Where are the maximum contracts? Maximum contracts are at 2,600. Okay, maximum contracts are open at 2,600 right now. Okay, so generally what happens is that people who sell calls. Now tell me one thing. Who's the guy who writes the contract? Who's the guy who writes the contract? Buyer or seller? Seller writes the contract. Okay. So seller is the guy who writes the contract. That means किसके terms है ये? Seller के terms है क्या buyer के terms है? क्योंकि वो प्रीमियम डिसाइड करता है ना, मुझे ₹1 चाहिए, मुझे ₹2 चाहिए. कौन बोलता है? किसके टर्म्स एंड कंडीशंस है? सेलर के है. सो यू थिंक सेलर इज, मतलब ही ड्रीम्स अबाउट इट? क्या हुआ? मतलब why is he putting ₹1 over there as to sell the paper, to sell the option? Why is he charging a premium to sell? Is he there to make a loss? कोई इधर is somebody stupid in this market कि वो बैठ के अपना बस लिखते रहेगा कुछ भी और लॉस करते रहेगा अनलिमिटेड? You think these are very smart people. Sellers are very smart people because वो लिख के दे रहा है. So कोई क्यों लिख के देगा? Now when you get a guarantee of a product, okay, free replacement. You buy a washing machine and they give you, or like say something you buy, and वो बोलेगा कि भाई free replacement if it gets over in 1 year, if it gets spoiled in 1 year, free replacement. तो is he crazy to give you a free replacement in 1 year? He knows कि 1 साल में खत्म नहीं, खराब नहीं होगा, इसलिए वो आपको गारंटी लिख के दे रहा है. Do you agree or you don't agree? Do you agree or no? Yes. If he is very sure कि उसका प्रोडक्ट नहीं खराब होने वाला है 1 साल में, इसलिए आपको फ्री रिप्लेसमेंट दे रहा है, एंड यू फील हैप्पी. अरे फ्री रिप्लेसमेंट है, कुछ भी होगा आई एम हैप्पी. अरे उसको पता है नहीं कुछ होने वाला है, लेकिन 2 साल की गारंटी नहीं देगा वो, बिकॉज ही नोज 1 साल के बाद कुछ भी हो सकता है. लेकिन ही इज सेफगार्डिंग हिज इंटरेस्ट. दैट्स द पॉइंट. ही इज सेफगार्डिंग हिज इंटरेस्ट. कॉल्स option seller is safeguarding his interest first. He knows that there could be a risk of a ₹1 hike in prices in books. He knows कि अगर prices ऊपर गया तो ₹1 जा सकता है, उसके ऊपर नहीं जाएगा. He knows that. Because of that, he's taking a premium for you for ₹1. Are you understanding? He's covering his risk from you by charging you a premium. Are you understanding? The buyer, not you. What I mean want to say is that he is charging the buyer his risk so that he's safeguarding his interest. Are you guys with me? Because the call seller is the option seller is the guy who's calling the shots. Correct? So वो उसका जब वो देख बोल रहा है मुझे इतना प्रीमियम चाहिए, that means वो उसका रिस्क अंदर डाल रहा है कि उसको पता है कि अगर ऊपर प्राइस जाएगा तो इतना जाएगा या नीचे जाएगा, जो भी ओके ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, बुलिश है या बेरिश है, उसको पता है कि ये मेरी ये प्राइस से ऊपर नीचे नहीं जाएगा.
That is why he's charging you that premium. He's covering his risk. Okay. So these are the guys who are big guys with deep pockets, the sellers. Generally, what they do is that they now over here, a call seller is a guy who's giving you a commitment to sell. Yes or no? Call seller कौन है? Commitment to sell. Yes or no? Call seller is giving you a commitment to sell ना कि मैं बेचूंगा ये प्राइस में आपको. So what is his view? Not above my price, strike price. What is his view? Not above my strike price. The price will not go above my strike price. उसका क्या व्यू है कॉल सेलर का? राइट इट डाउन इफ यू वांट. कॉल सेलर का ये व्यू है कि मेरी स्ट्राइक प्राइस से ऊपर प्राइस नहीं जाएगा. यस, तो ही वो ट्रांजैक्शन करेगा, नहीं तो वो नहीं करेगा. Well, Gaurav, there is a difference. Yes, he has a bearish outlook, but he does not really have a bearish outlook. Does he? अगर स्ट्राइक प्राइस सेम रहेगा तो भी उसको मिलेगा पैसा कि नहीं मिलेगा? अगर प्राइसेस सेम रहेंगे तो उसको प्रीमियम मिलेगा कि नहीं मिलेगा गौरव? मिलेगा ना. प्राइसेस नीचे गया क्या? नहीं गया, सेम रहा. प्राइसेस सेम रहा तो भी he made a full this thing, right? So he is mildly bearish and his view is मेरी strike price से ऊपर प्राइस नहीं जाएगा. सेम प्राइस रहा, ग्रेट. नीचे गया, नो प्रॉब्लम. उसको तो उसका प्रीमियम मिलना है. उसकी स्ट्राइक प्राइस से अगर प्राइस ऊपर नहीं जाएगा, ही इज किंग. उसको प्रीमियम मिल जाएगा. करेक्ट? अ कॉल सेलर दिस is everybody with me? So what happens is that जो यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप होता है, that becomes the resistance for the market, because maximum open interest यहाँ पे है. Okay, and we will assume that the maximum open interest is the call seller. Generally calls the sellers are making this maximum open interest here. Okay, so agar maximum open interest yahan hai to he will not let the prices go above his strike price. What is his view? मेरी strike price से ऊपर नहीं जाएगा price. Yes, then that becomes the resistance for the market, for the stock. Okay, so 2600 becomes a resistance for Reliance. First resistance. If this prices go above, then the second resistance happens here at 2700. Okay, so this is current expiry. Now ye current expiry to khatam ho rahi hai few days mein, on just like 2 days left, and the expiry is it's just 4 days left basically for expiry. That's why also the option chain is looking like this. But you will see that generally the highest open interest on the call side is the resistance for the market. क्यों? क्योंकि कॉल सेलर का क्या व्यू है? मेरी स्ट्राइक प्राइस से ऊपर नहीं जाएगा. Okay, what is his view? Not above my strike price. Now let's talk about the put side. Where is the maximum open interest on the put side? $2,500. Correct. So what is put seller's view? Not below my strike price. What is the put seller's view? He is mildly bullish, right? What is, because he commitment to buy कर रहा है ना. कोई क्यों commitment to buy करेगा? वो commit कर रहा है ना, मैं buy करूंगा आपसे ये price में. He said ना, I will buy from you. So what is his view? Put seller का क्या view है? Not below my strike price. मेरी strike price से नीचे price जाएगा नहीं. वो लिख के इसलिए दे रहा है because he knows कि उसकी price strike price से ये जाएगा नहीं नीचे. ओके और अगर जाएगा तो उसका रिस्क कवर कर रहा है प्रीमियम में. ओके, सो दैट बिकम्स अ सपोर्ट फॉर द मार्केट. ऑन द पुट साइड जो मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप होता है, दैट बिकम्स अ सपोर्ट फॉर द मार्केट, बिकॉज मैक्सिमम पोजीशंस यहाँ पे बिल्डअप है. दैट मीन्स पीपल हैव सोल्ड पुट्स ओवर देयर. Okay, people have sold puts over there, and he says that मेरे प्राइस से नीचे जाएगा नहीं. That means that becomes a support for the market. Is that clear, guys? So put seller has a view not below my strike price. Call seller has a view not above my strike price. Okay? Now, if you see over here, change in open interest. This is the change in open interest. Okay?
No, are you seeing this? कल में और आज में मतलब what happened between Thursday and Friday? ये Friday का option chain है, right? So how market watch आप देखते हो तो देखते हो ना माइनस प्लस. So एक दिन पहले और अभी से क्या फर्क है? From yesterday to today, what is the difference? Right? So वैसे सेम है ये कि कल थर्सडे और फ्राइडे में क्या फर्क हुआ इधर. वो क्या फर्क हुआ that 688 contracts square off हुए. Are you seeing this minus sign? Okay, so 688 contracts were squared off. It means that. All right. Now, over here, if you see, more contracts were built up. Either add हुए contracts. यहाँ पे सब contracts add हुए. Plus, plus, plus sign है. So people have started opening contracts on the higher strike prices. यहाँ पे कितना maximum addition हुआ है ये strike price पे. I need to move over here. Maximum addition कहाँ पे हुआ है? Maximum addition has happened at this strike price 2620. 2620 पे 1000 contracts have been added. Okay, now this is all expiry, so we will not look at it now. There's not much relevance because 4 दिन में सब खत्म हो रहा है. So 2620 पे maximum contracts are getting added. Okay, so these columns are all here. That's the open interest, change in open interest. Okay, Anjan. So this is how it is. All right, and this is the price at which the contracts are traded. Now, option chain analysis जो है, now you know when you build a view on the market, there are two ways of building your view. Somebody had written ना मुझे पता नहीं चल रहा है कौन सा stock select करे, how to enter a trade, what to do. Well, so there are two ways of entering a trade, of doing some analysis. ठीक है? So you can either use technical analysis to build up a view कि भाई ये मेरा entry है, ये मेरा stop loss है, ये मेरा exit है. That's one way कि आप चार्ट देखोगे, आपके चार्ट के ऊपर आप पूरा प्लान करोगे. सेकेंड व्यू इज ऑप्शन चेन एनालिसिस. दैन आप ऑप्शन चेन को ऑब्जर्व करोगे कि कहाँ पोजिशंस बिल्डअप हो रहे हैं, कहाँ पे नहीं हो रहे हैं, कहाँ पे वाइंड अप हो रहा है, अनवाइंडिंग हो रहा है, यू नो. सो ये पूरा आप स्टडी करोगे. सो नाउ अगर आप टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हो, इट बिकम्स वेरी इजी बिकॉज यू एनीवेज नो हाउ टू प्लान योर एंट्री, स्टॉप लॉसेस एंड टारगेट्स, राइट. नाउ if you are doing option chain analysis, you cannot do one fine day. Okay, आपको पूरा उसको follow करना पड़ेगा every day because this will give you a change from yesterday to today. All right, but you will have to keep following these option chains constantly. आपको follow उसको करना पड़ेगा to know कि भाई ये मेरा option chain में build up हो रहा है नहीं हो रहा है. So every day का, so you can download your भाव copies and all from here. You get it from your NSE website. भाव copy मिलता है आपको, वो पूरा you can just download it and create an entire data. Little tedious. It's easier to just use technical analysis and get on to your work, but people who like to do option chain analysis, they will have to do that one fine day up. Yes, it keeps changing, but closing prices matter. Okay, so how what it has closed at, because पूरे दिन में तो जो भी intraday volatility चलेगी, लेकिन end of the day क्या close हुआ is what matters. So end of the day only you can download your भाव copies and you know you can basically build up your entire link नहीं भेजना है my dear Nita, it is on the option NSE website. कोई लिंक नहीं है, मैं नहीं भेज सकती हूँ. इट्स ऑल ऑन द NSE वेबसाइट. ओके, सो ये पूरा आपको ट्रैक करना पड़ेगा कि क्या हो रहा है मार्केट में और कैसे दिस थिंग. ओके, इट्स लाइक दैट. दिस इज NSE वेबसाइट guys. This is the NSE website. Okay, NSE option chain. NSE website पे आप जाइए, you will find option chain. Okay, that's what it is. So don't get into the IV. Okay, don't get into all that, just ignore it. We won't use this at all. ये पूरा ignore करो, उसका कोई meaning नहीं है. Okay, so now this is NSE website, guys. NSE website. Just go and find it. Just type option chain on the search button, as simple as that. Don't bother getting into the link and all. Just go NSE website, home page, ऊपर search button में पूरा option chain लिखो, ये निकल जाएगा. इतना easy है. Yes, option chain, that's it. Okay. Okay, so now so everybody understood these build-ups, all right?
So now let's understand one thing. I'm going to stop share here for now. And I am going to option pricing. I'll quickly introduce you to the subject before we break for lunch. So what is option pricing? Option pricing is premium, correct? Sriram, have we learned about executing trades? Have we learned? We've not learned ना. Why are we thinking of planning trades? We don't know only how to plan trades अभी. अभी तो एक भी strategies भी नहीं किए. कैसे आप trades plan करोगे? आप नहीं कर सकते हो. Trade planning is last. Okay? पूरा आपने को समझना है ना पहले. So now option premium. Okay, we're talking about that 1 rupee premium, 2 rupees premium, 3 rupees premium. तो ये ऑप्शन प्रीमियम बनता कैसे है? किसी को सपना आता है, किसी को बस मन हो जाता है, किसी को बस ब्रेन वेव आता है. कैसे ऑप्शन प्रीमियम कोई लगाता है? कोई लॉजिक है? ऑफ कोर्स लॉजिक है. हाउ इज द ऑप्शन प्रीमियम कंप्यूटेड? ऑप्शन प्रीमियम बनता कैसे है? ओके, तो जब भी कोई एक्स आप सामान बाय करने, आप मोबाइल बाय करने जाओ या कुछ भी बाय करने जाओ, तो कुछ लॉजिक होता है ना. मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इतना होता है, ये इतना उतना एडेड, ये होता है, वो होता है, वो होता है, प्लस 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 करके एमआरपी बनता है. कोई लॉजिक होता है, राइट, इन द प्राइस. तो व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड एन ऑप्शन प्रीमियम? पीपल, यू हैव टू आस्क दैट कि भाई ये प्रीमियम है क्या, क्यों ये है प्रीमियम, व्हाई, व्हाट इज द रीजन दैट दिस इज व्हाट द प्रीमियम इज. So option premium is made up of two variables. Okay, there are two values which are a part of the option premium. एक intrinsic value है और दूसरा time value है. Okay, what are the two variable? What are the two things that make up the option premium? एक intrinsic value है and एक real value है. Now, what is intrinsic value? Intrinsic value is the real value. We were talking about benefit ना. पता है वो टेबल पे पूरा बेनिफिट वी सेड कि 260 का स्टॉक है, पुट ऑप्शन है, क्लोजिंग प्राइस 220 हो गया, तो बेनिफिट कितना हुआ? 40 रुपीज. यस और नो? वी डिड दैट एंटायर एक्सरसाइज ऑफ पुट ऑप्शन, कॉल ऑप्शन, राइट? तो व्हाट डिड वी कैलकुलेट? वी कैलकुलेटेड बेनिफिट. First, what did we calculate? First, we calculated the benefit and then we calculated individual profit and loss. Right or wrong? Right or wrong, guys? Is everybody awake? लोग तो उतने ही है. So please be awake. Yes. So we calculated benefit. वो जो benefit अपने calculate किया is the intrinsic value. What is that? The benefit that we calculated is the intrinsic value. Now let's go on to the option chain. Okay. Now I'm going to share the option chain. Now you guys will calculate the premium and tell me. Can everybody see my option chain? Yes. So let me zoom in here. Okay, only this part I can zoom, I can't zoom both. Okay, because can everybody see the call side? I've opened the call side right now. Okay, okay, I'm only opening the call. Put side nahi hai abhi. So ye strike prices hai apne sir. Okay, that's the last traded price. That's your open interest, change in open interest. Okay, so now move this out, please. Yes. Now 2600 strike price and current market price is what? Reliance ka 2600. Yes or no? What is the current market price? 2600. और ये जो स्ट्राइक प्राइस है 2600 है, करेक्ट? तो ये इसका प्राइस क्या होना चाहिए? What is the intrinsic value or the real value or the benefit of a 2600 call option?
2600, हाँ साथी, वेरी गुड विजय। बेनिफिट तो है नहीं, 26 का स्ट्राइक है, 26 करंट मार्केट प्राइस है, तो उसमें बेनिफिट क्या हुआ? कुछ नहीं। व्हाट इज द प्राइस? 3105। द प्राइस इज 31, करेक्ट। एंड एक्चुअली इसका इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है? 0। व्हाट इज द ऑप्शन प्रीमियम मेड ऑफ? Intrinsic value and time value. What is intrinsic value? Intrinsic value is the benefit or the real value. And time value is what we option players want to play with. Real value तो सबको पता है, उसमें क्या कोई बड़ी बात नहीं है. What are we interested in as option traders? We want to trade the time value. This time value is the smoke in the balloon or the hawa in the balloon, and we want to trade that because real value तो real value है, उसमें कुछ कोई कर नहीं सकता है. Okay, so tell me the benefit of no tell me the real price of अरे so what should be the real price of 2560 call option? Real CMP 2600, 2560 में बेनिफिट कितना है? परफेक्ट 40. What is the price? How much is the intrinsic value? How much is the time value over here? Yes, 40 is the intrinsic value, 17 is the time value. Superb, excellent. I'm very happy to see this. 2500 call का real value क्या है? It is at 108.70. So what is the intrinsic value? What is the time value? 100 is intrinsic value. Superb. And time value is 8 rupees 70 paisa. 1.8 rupees 70 paisa. Superb is the time value, right? So now 2400 कॉल का रियल वैल्यू क्या होना चाहिए? करंट मार्केट प्राइस 2600, तो मतलब एडवांटेज कितना है इसके अंदर? 200 का एडवांटेज है. सुपर्ब. एंड व्हाट इज द प्राइस? 205.25. सो कितना एक्स्ट्रा है? एक्स्ट्रा इज 5 रुपी 25 पैसे. वेरी गुड. सो 200 is the intrinsic value, 5 rupee 25 paise is the time value. Okay, now let's talk about a 2660 call option. What is the intrinsic value of a 2660 call option? What is the benefit? What is the benefit? What is the benefit of buying a 2660 call option when the current market price is 2600? Is there any benefit? Is there any benefit of buying an option which is higher than the current market price? अगर आपको buy करना है, आप higher than current market price buy करोगे कि lower? Lower ना? We are not talking about profit and loss. We are talking about benefit. Benefit है कि नहीं है? बेनिफिट है ही नहीं, बिकॉज यू वांट टू बाय लोअर. सो अगर करंट मार्केट प्राइस 2600 है तो आप 2660 का क्यों बाय जाके करोगे? सो इसमें बेनिफिट नहीं है. तो भी देयर इज अ वैल्यू ऑफ 12 रुपीज अटैच्ड ओवर हियर. दैट मींस इट इज ओनली टाइम वैल्यू. देयर इज नो बेनिफिट. Intrinsic value is 0. So either there is benefit or there is no benefit. There is never a negative benefit. Okay, so intrinsic value can never be negative. It is either there or it is not there. So जो 12 रुपए यहाँ पे दिख रहा है is complete time value. Okay, it's complete time value. All right, so this is what it is. Just an introduction, guys. We will do this topic completely in details after lunch. Let's break for lunch. 2 o'clock. I see you guys right back here. Okay, so I'm going to see you guys back here at 2 o'clock. Yeah, yes, see you all in some time, in an hour's time. Yeah.